the fourth properties of metals, that is metal are lustrous. Metal are lustrous. Metal are lustrous. Metal are lustrous. Now we will see about this. So for example, gold, silver, copper are shiny metals and they can be polished. ये ऐसे मेटल्स होते हैं बेटा जिन्हें हम पॉलिश किए जा सकते हैं. देखा होगा आप लोगों ने, इनमें शाइनिंग होती है, चमकते हैं. चमकने का मतलब यही होता है कि मेटल्स आर lustrous. Now the metal are generally hard. Metal are generally hard. First, second, third, fourth, and this is fifth property. So metal are hard. So excepting sodium and potassium, which are soft metals, you know students, which are soft metals, most of the metal are hard. For example, iron. You know about the iron? Fe. Fe is the hard metal, but all the metals are not equally hard. The hardness varies from metal to metal. Most of them metals like iron, copper, aluminum, etc., etc. Very hard. They can be cut with a knife, and there are some exceptions. Sodium and potassium are soft metal which can be easily cut with a knife. इन्हें हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं, और सॉफ्ट मेटल इतने होते हैं कि इन्हें हम नाइफ से कट करते हैं. इजीली कैन बी कट बाय द नाइफ. नाउ वी विल सी द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग. सो दिस मीन्स दैट द मेटल्स कैन होल्ड अ लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जो मेटल्स हैं वो बहुत ही हाई लोड जो है, वजन जो है, सह सकते हैं. सो मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग. मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग. Now the seventh property, that is metals are solid at the room temperature. Except mercury. स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम होगा कि जो मरकरी होती है, which is a liquid metals, which is liquid, because जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है, उसे आप अपने हाथ पे भी रख सकते हैं, which is liquid metals. And all the metals like iron, copper, aluminum, silver and gold also are solids at the room temperature. Only one metal, mercury, is in liquid state at the room temperature. जो मरकरी होती है बेटा, सिर्फ यही एक ऐसी मेटल्स होती है जो क्या होती है, आपकी लिक्विड होती है, उसे आप हाथ पे भी रख सकते हैं और आपको लिक्विड जैसा लगेगा. Now so metals are solid. Metals are solid at the room temperature. The room temperature. At the room temperature. Now the eighth property, metals have high densities. Metals have high densities. Metals have high density. Now what is the density? What is the meaning of density? So this means that metals are heavy substances. For example, the density of iron metal is 7.8 gram per centimeter cube, and which is quite high. There are however some exceptions. For example, sodium and potassium metal have low density. जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो मेटल्स के पास बेटा जो है लो डेंसिटीज होती है. They are very light metals. Now the 10th property, that is metal are sonorous. Metals are sonorous. Metals are sonorous. सोनोरस का मतलब क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में भी बेटा पढ़ा होगा. सोनोरस क्या होता है? सो दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड, जिसमें हमें बजाने पे, ठक करने पे आवाज आती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन नहीं. सो दिस मीन्स दैट द मेटल मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक देम. व्हेन वी स्ट्राइक देम, जब हम उन्हें स्ट्राइक करते हैं तब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. It is due to the property of sonorousness of metals. They are used for making bells, plate, ties, musical instruments like मंजीरा, जिसे हम cymbals भी कहते हैं, and the wires for string musical instruments such as the violin, guitar, sitar and tanpura etc. also. So for example, जैसे देखा होगा आप लोगों ने बेटा
स्कूल में आपके घंटी लगी होती है तो सोनोरस होती है ना, तो इसका यूज़, तो वो मेटल क्या है, सोनोरस है। नाउ द मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर्स एक्सेप्टिंग कॉपर एंड गोल्ड, क्योंकि कॉपर आपका बेटा जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है, ब्राउन एंड येलो भी थोड़ा सा कलर होता है, एंड गोल्ड हैव ऑल्सो गोल्डन कलर। कॉपर हैज़ अ रेडिश ब्राउन कलर वेयर एज अ गोल्ड हैज़ अ येलो कलर्स, एंड so this is the metals usually have a silver or gray colors. So this is the 10th property, that is metals usually have silver and gray color. Thank you students.